गुड इवनिंग गाइस एंड उस समय तक हम लोगों ने देखा था कि सी प्रोग्रामिंग में बेसिक चीज़ें लाइक इंटीजर किसको बोलते हैं, कैरेक्टर किसको बोलते हैं एंड कांस्टेंट किसको बोलते हैं, वेरिएबल्स किसको बोलते हैं। और देखा कि इंट्रोडक्शन देखा कि लाइक व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग क्या है। और अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्रोग्रामिंग। बेसिक स्ट्रक्चर एक क्या होना चाहिए सी प्रोग्रामिंग का, वो हम लोग देखते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए सी प्रोग्रामिंग। जितने भी सी प्रोग्रामिंग है वो एक बेसिक स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। लाइक वो अपना जो स्टार्टिंग होता है मेन फंक्शन से होता है, लाइक इंट मेन, ये मेन है। इसके नीचे जितना भी हम प्रोग्राम लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे, उसको फॉलो करता जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ आएगा, ऐसे करके फॉलो करेगा। सो ऑल सी प्रोग्राम्स हैव टू फॉलो अ बेसिक स्ट्रक्चर which starts with a main function and executes all the instructions present in it. Each instruction is terminated with a semicolon. ये कहने का मतलब है कि जितना भी जो अपना ये है इंस्ट्रक्शंस है, ये वन बाय वन फॉलो करेगा और इस सेमी कॉलन के साथ एंड होगा। सपोज ये है, हम लिखते हैं इंट ए, राइट, फिर ये सेमी कॉलन करेंगे तो ये एंड हो जाएगा। फिर लिखेंगे इंट बी, फिर ये ख़त्म हो जाएगा। फिर यहाँ पे सपोज हमको प्रिंट प्रिंट एफ करना है, प्रिंट एफ ए को प्रिंट करना है, राइट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए, और ए सपोज ए को हम दे देते हैं ए वन, ए इक्वल टू 10, देन ए विल प्रिंट। फिर नीचे इंस्ट्रक्शन बी को प्रिंट करेंगे तो वैसे वन बाय वन होगा। ऐसा नहीं कि इट विल नेवर हैपन्स लाइक दिस विल बी विल प्रिंट फर्स्ट एंड ए विल प्रिंट सेकेंड लेटर आफ्टर बी। इट विल नेवर डू बिकॉज whatever there is some basic structure of C programming, like one by one it will print, one by one it will execute, and at end it will goes out of the loop. Okay, so there are some rules. I'm going to write some rules. Some rules I'm going to write. There are some rules which are applicable to all C programs, right? So the first one is the every program execution start from main function. मैंने पहले ही बोला, जो भी जितना भी प्रोग्रामिंग जो होगा उसका जो एग्जीक्यूशन होगा वो मेन फंक्शन से, मतलब मेन फंक्शन से स्टार्ट होगा। सो एवरी प्रोग्राम एग्जीक्यूशन एवरी प्रोग्राम execution starts with main function, right? Secondly, और जितना भी जो प्रोग्राम होगा लाइक इंस्ट्रक्शन होगा वो टर्मिनेटेड होगा अपना सेमीकोलन के साथ। सो ऑल द स्टेटमेंट्स आर terminated with the semicolon, right? Like this. Okay, now the third one. And I have already told you that the instructions are case sensitive. So instructions are, whatever the instructions we are writing that are case sensitive, instructions are case sensitive. Suppose if I write int a equal to 15 and if I write int capital A equal to 20, so this has some different meaning and this has some different value. Like a equal to 15,
and capital A equal to 20. So they both have different variables. Naming are different, so their values are also different, and they are case sensitive. Okay. Now fourth one, instructions. जो भी जितना भी जो हम इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे वो सेम ऑर्डर पे फॉलो होंगे, लाइक पहला इंस्ट्रक्शंस लिखें, फिर सेकंड लिखें, फिर थर्ड लिखें, फिर फोर्थ लिखें, पहला ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, वन बाय वन दे विल फॉलो द ऑर्डर. ओके. Instructions are executed in the same order in which they are written. Instruction are executed in the same order in which they are written. In which they are written. Okay. So this is all about the basic structure of a program. Now there are some another things also we'll be using, and that term is called comments. हम कमेंट के बारे में जानते हैं, लाइक कमेंट्स करते हैं किसी के फोटोज़ में, इंस्टाग्राम के फोटोज़ में, एंड तो हम क्या दर्शाते हैं, कुछ कमेंट्स लिखते हैं, उसके फ़ोटोज़, उसके कैप्शन के अलावा भी कमेंट्स जो डाल सकते हैं कि क्या कुछ लिखना है, एक्स्ट्रा नोट्स. तो हम कंप्यूटर में लैंग्वेज में भी हम कमेंट का इस्तेमाल करते हैं, और कमेंट मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी यूजिंग फॉर द नोट्स, एक्स्ट्रा नोट्स, वट एवर वी वांटेड टू राइट, वी वांटेड टू कन्वे द पीपल दैट दिस इज द कोड, दिस इज द लाइन which is telling this. In other words, we wanted to tell in our human language that is very understandable, so it can be understood by everyone. So for that purpose we write. हम comments को इसलिए लिखते हैं ताकि एक extra notes के लिए, ताकि जो भी हम कोड लिख रहे हैं उसको एक अलग तरीके से किसी को हम दर्शा सकें. So comments are used to clarify something about the program. Comments are something which are used to clarify about the program. And we can say it is a way to add notes to our program. Now there are two type of comments. One is single line comment and another one is multi-line comment. There are two types of comments. दो तरह के comments होते हैं. एक होता है single line comment. Like this we use in program. Or another one is multi-line comment. ये स्टार्टिंग जब हम कोई लाइन लिखते हैं, सपोज वी आर राइटिंग या चंदन चिराग कुछ भी लिख दिए बीच में, एंड वी डू लाइक दिस एंड डू स्टार मार्किंग एस्ट्रिक एंड देन आफ्टर दैट एस्ट्रिक एंड देन स्लैश, वी क्लोज्ड. And this is for single line, whatever we want to write. Suppose if we do double that slash, and then after that we want to write any line, for single line purpose we use this single line comment, this one, and for multi line this we use this one. Okay. And one more thing I wanted to tell about comments. जो comments होता है प्रोग्राम में वो एग्जीक्यूट नहीं होता और वो इग्नोर कर दिया जाता है कंपाइलर के द्वारा. ओके. comments in a C program are not executed and are ignored by the compiler. Okay.
अब हम देखते हैं कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे मतलब काम करता है रियल रियल सिनेरियो में। एक वी विल टेक वन एग्जांपल एंड हाउ द कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन वर्क्स इन अ कंप्यूटर, इन अ प्रोग्राम, इन अ पीसी, इन अ मेमोरी। कंपाइलेशन एंड एग्जीक्यूशन। कंपाइलेशन एक चेकिंग प्रोसेस होता है और एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूट कर देता है, फाइनल रिजल्ट देता है वो। ओके, compilation always checks the things and execution gives the result. Now suppose we want to write the in VS Code, suppose we open the VS Code. Okay, VS Code में हम open करते हैं and we write first program dot C. In C language we will write it to the program. Okay, now what it will do, whenever we write the program, we will write the program anything like int a and all this program we will write, right? यहाँ पे हम प्रोग्राम लिखें। अब ये क्या करेगा, ये डायरेक्ट कंपाइलेशन सी कंपाइलर में जाएगा। कंपाइलर एक प्रोसेस है जो प्रोसेस करता है, जो हमारा मशीन लैंग्वेज होता है, कंपाइलर होता है उसके पास। कंपाइलर कंपाइल करेगा इस चीज़ को एंड वॉट एवर वी राइट इन द प्लेन टेक्स्ट, सपोज वी कोडिंग वी राइट इन प्लेन इंट इक्वल टू इतना एंड ऑल दिस प्लेन टेक्स्ट विल कन्वर्टेड इनटू बाइनरी फॉर्म एंड ऑल पी मतलब इन प्रोग्राम के कंप्यूटर के फॉर्म में, क्योंकि कंप्यूटर नॉर्मल डिजिट ए बी सी 1 2 3 नहीं समझता, वो अपना एक बाइनरी डिजिट होता है 0 1 1 वही समझता है। Computer only understands 0 and 1, so it will convert the form into binary form, that a b c 1 2 3 whatever we write plain text, and then compiler will check the sums, all the things whatever we have written in a code, and then it will convert into बाइनरी फॉर्म एंड देन दैट विल गो फॉर एग्जीक्यूशन। इसके बाद एग्जीक्यूट होगा। अगर इसमें से कुछ गलती होता है तो कंपाइलर इसको रिजेक्ट कर देगा, कंपाइलर में एरर बता देगा और वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। सो आफ्टर दैट इट विल फर्स्ट पी डॉट ई एक्स में एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिजल्ट दे देगा। सपोज ए हमको करना चाहते हैं ए प्लस बी, प्रिंट करना चाहते हैं ए प्लस बी, ए 10 है बी 20 है, तो ए प्लस बी हमारा 30 दे देगा। तो यहाँ पे रिजल्ट मिल जाएगा आपको और एक फाइल बन जाएगा एक्सटेंशन नेम डॉट ई एक्स। सो दिस इज द प्रोसेस। नाउ सम अप करते हैं, इस चीज़ को लिखते हैं हम यहाँ पे नीचे। वी विल राइट दिस वन, वी टेक अनदर पेन, ग्रीन में लिखते हैं। सो वी विल राइट compiler is a computer program which converts a C program into machine language so that it can be easily understand by the computer। ओके, और हम इस चीज़ को लिखते हैं, कंपाइलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम विच कन्वर्ट्स अ सी प्रोग्राम into a machine language so that it can be easily understood by the computer। okay, basically C program is written in plain text, okay। Now this C programming basically plain text which is plain text which is combination of instruction in a particular sequence। okay,
बेसिकली जो प्लेन टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो एक कॉम्बिनेशन है इंस्ट्रक्शंस का और एक पर्टिकुलर सीक्वेंस के साथ एक तरीका है, लिख रहे हैं हम एल्गोरिथम, उसको फॉलो कर रहे हैं, स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं. द कंपाइलर परफॉर्म सम बेसिक चेक्स एंड फाइनली कन्वर्ट्स द प्रोग्राम इनटू एग्जीक्यूटेबल. अब कंपाइलर, मैंने पहले ही बोला था, कंपाइलर अपना चेक करेगा, देखेगा, कुछ बेसिक्स चेक्स करेगा, अगर वो उसको लगेगा कि हाँ वो चीज़ सही है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में एक फाइल को बनाएगा. सो द कंपाइलर performs some basic checks and finally converts the program into an executable फॉर्म. ओके. इसके अलावा भी लाइक अभी हम बात किए हैं कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे वर्क करता है. वी हैव टॉक अबाउट हाउ द कंपाइलेशन एंड द एग्जीक्यूशन वर्क इन सी प्रोग्रामिंग. नाउ वी विल टॉक अबाउट लाइब्रेरी फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है सी प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए, और बेसिकली प्रोग्रामिंग को रन करने के लिए कोई भी लैंग्वेज में एक लाइब्रेरी फंक्शन होता है. उसके बारे में हम बात करते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस के बारे में. Let's talk about library function. बेसिकली लाइब्रेरी फंक्शंस जो होता है सी लैंग्वेज में, उसका कोई टास्क होता है, कोई सर्टेन टास्क होता है जो उसको इंस्टेंट वेरीफाई करके हमको रिजल्ट देता है. बेसिकली सी लैंग्वेज हैज़ अ लॉट ऑफ वेरी वैल्यूएबल लाइब्रेरी फंक्शंस. सी लैंग्वेज के पास बहुत ज़्यादा मतलब लाइब्रेरी फंक्शंस है विच इज़ यूज टू कैरी आउट सम टास्क. फॉर इंस्टेंस सपोज हम एग्जांपल लेते हैं प्रिंट एफ फंक्शन का, विच इज़ यूज टू प्रिंट वैल्यूज ऑन द स्क्रीन, राइट. तो वो एक प्रिंट एफ हम बोल सकते हैं, इट्स अ लाइब्रेरी फंक्शन. इज ए एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल scanner for scanning, printf for printing. There are a lot of library functions. So C language, you can summarize C language lot of function which is used to carry out certain tasks. Okay, now I will talk about print function. Like suppose if I write print in a program like int main, we are writing and we're writing like printf. Okay, suppose I write this is print %d, right. Now so this will print whatever the value we provide. It will, I will print this one. So this is a function of printf. printf का फंक्शन है कि वो प्रिंट करके देगा i, जो भी i के अंदर जो भी वैल्यू होगा. और कुछ देखते हैं हम इंटीजर के लिए %d यूज़ करते हैं यहाँ पे वैल्यूज़ को प्रोवाइड करने के लिए, लाने के लिए. मॉडुलस d फॉर इंटीजर्स, modulus f for real values like -3, 2, 2.5, 2.666, and modulus c for characters. Okay. Now we will talk about types of variables. We will talk about types of, like this is the introduction part, that's why I'm explaining this much. Like I'm writing this much. Later on period I will be only focusing on the codes, how we can write effective code and how we can do coding part.
Now this one is integer variable. Suppose int a equal to 20, int b equal to 30, like that. And real variables, this one is real variables, -3, 2, 2.5, 2.666. And another one is character variable. Character a equal to, we will write this one bracket, small bracket, character b equal to like that. Okay. Now there is one another thing I wanted to, like, suppose we wanted to receive input from the user. Like, suppose user wanted to write something like a, he want to write a equal to 20, b equal to something, or c equal to something. So in order to do this one, we have one function that is called that library function that is called scanf function. So for receiving for receiving the input from the for receiving the input from the user, we use scanf function. सपोज यूजर चाह रहा है कि मैं ए इक्वल टू 15 दूँ, बी इक्वल टू इतना दूँ, और दोनों को सम दे के रिजल्ट निकलवाऊँ, तो उसके लिए हम स्कैनफ फंक्शन यूज़ करते हैं. स्कैनफ फंक्शन कैसे, सिंटेक्स कैसे लिखेंगे, तो हम राइट लिखते हैं सिंटेक्स इसका ऐसे होगा, स्कैनफ ये देंगे मॉडुलस डी, इसको ये कॉमा देंगे यहाँ पे, और इसको एड्रेस, ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है, इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर है ये. ओके. एंड ऑपरेटर वगैरह के बारे में हम शायद बात कर चुके हैं पहले. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर. ओके. So address of operator, it means that the supplied value should be copied to the address which is indicated by the variable a, right. इसका मतलब ये है, तो चाहिए हाँ, suppose this one is address, right, the address of operator, and it means that the supplied value should be copied to the address which is indicated by variable I, this one. Okay. Now this is the theory part we have done. Now in next class we will be doing some programs related to these topics whatever I have covered today. So thank you guys, just go through these topics whatever I have done today, and then after that we will be doing coding part. So thank you guys, thank you all.